UPSC prelims questions answers. So let's begin. What is the difference between the plant cell and an animal cell? Plant cell have a white wall, cell wall and chloroplasts. प्लांट सेल के पास सेल वाल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, वाल एनिमल सेल लैक दिस स्ट्रक्चर. एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता है? सेल वाल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. एनिमल सेल के पास सेल वाल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. एनिमल सेल के पास सेल वाल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. एनिमल सेल के पास सेल वाल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. व्हाट इज द पीएच स्केल used to measure? The pH scale measure the acidity or alkalinity of a substance. एसिड है या एल्कलाइन है उसको मेजर करने के लिए पीएच स्केल इस्तेमाल होता है. व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. What is the function of the human respiratory system? The respiratory system is responsible for gas exchange, supplying oxygen and removing carbon dioxide. Respiratory system जो सिस्टम है हम लोग का वो गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए. What is the process of photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plant converts sunlight, water and carbon dioxide into glucose and oxygen using chlorophyll. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि प्लांट जो है वो सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है क्लोरोफिल की मदद से. What is the structure and function of DNA? DNA means deoxyribonucleic acid is a double helix structure that contains genetic information. DNA में genetic information होता है, double helix structure होता है. It serves as a blueprint for the synthesis of protein. DNA जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है. What are the renewable source of energy? Provide example. Renewable source of energy can be replenished naturally and include solar, wind, hydraulic and biomass energy. What is black hole? Black hole is a region in space where gravity is so strong that nothing, not even light, can escape from it. ब्लैक होल एक रीजन है स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज़ नहीं स्केप कर सकता, इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकता है. डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. What are the different states of matter? States of matter are solid, liquid, gas, plasma. They differ in their arrangements and movement in particles. What is the greenhouse effect? The greenhouse effect is a process by which Earth's atmosphere traps heat, leading to gradual decrease in global temperature. ग्रीनहाउस इफेक्ट एक प्रोसेस जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है. डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इनर्शिया जो है एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है ऑब्जेक्ट की कि बदलाव को रोकने की प्रवृत्ति ऑब्जेक्ट की इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. उसके मोशन में जो बदलाव को रोकने की जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की उसको बोलते हैं इनर्शिया. What are the principal components of nervous system? The nervous system comprises of brain, spinal cord, nerve. It controls the and coordinates bodily function. Nervous system में brain, spinal cord और nerve आता है. Brain, spinal cord और nerve आता है. ये control और coordinate करता है bodily functions को. Explain the process of digestion in human. Digestion involves the breakdown of food into smaller molecules that can be absorbed by the body. It starts with the mouth and continues throughout the stomach and intestine. What is the difference between the chemical change and a physical change? The chemical change results in the formation of new substances, while a physical change alters the appearance of substance or state of substance without forming new one. मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बदलाव क्या है? केमिकल चेंज की वजह से नया सब्सटेंस बन जाता है, जबकि फिजिकल चेंज जो है वो सब्सटेंस के दिखने को, अपीयरेंस को बदल देता है. जैसा दिख रहा है सब्सटेंस उसको बदल देता है, या सब्सटेंस के मोड को बदल देता है, स्टेट को बदल देता है, सॉलिड से लिक्विड, इस तरह से. विदाउट फॉर्मिंग न्यू वंस, माने नया चीज़ बनाए बिना वो सिर्फ स्टेट को बदलता है या लुक को बदलता है. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज तो नया बना देता है, सब्सटेंस को नया फॉर्म कर देता है सब्सटेंस. डिफाइन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट में द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट लाइट, द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. What is the concept of osmosis? Osmosis is the movement of solvent molecule through a semi-permeable membrane from a region of lower solute concentration
to a higher solute concentration. Osmosis is the movement of solvent molecule through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं. लोअर कॉन्सेंट्रेट रीजन, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, उससे हायर कॉन्सेंट्रेट रीजन में जाएगा solvent molecule. That is known as osmosis. So what are the major blood types of major blood types of human? The major blood types of A, B, AB, O, which are determined by the presence or absence of specific antigens on red blood cells. Describe the process of mitosis. Mitosis is the division of cell into two identical daughter cells. Mitosis में दो सेल daughter cell बच्चियां सेल बन जाती है, दो बच्चियां सेल्स बन जाती है. माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल का था टूटा था, उतना ही क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल्स में भी रहेंगी. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट फ्यूजन. Nuclear fusion is the splitting of an atomic nucleus into two or more small nuclei accompanied by a release of a large amount of energy. यानी ब्रेकडाउन होना, टूटना एटॉमिक न्यूक्लियस का दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्ली में, जिसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी का रिलीज हो रहा है. दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन. That's all about the 20 questions of science. So let's move on to the next topic of UPSC IS exam preparation, that is general issue related to environmental ecology. So what is biodiversity? Biodiversity refers to the variety of living organisms in a particular area, including genetic diversity, specific species diversity and ecosystem diversity. Biodiversity में बहुत सारे variety होता है, living और जीवंत प्राणियों का बहुत सारे variety के प्राणियों को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. एक पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव, अलग अलग तरह के वैरायटी के जीव रह रहे हैं, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आएगा, शामिल होगा, स्पीसीज का डाइवर्सिटी भी होगा, इकोसिस्टम वाला डाइवर्सिटी भी होगा. So what is the significance of the ozone layer in the atmosphere? Ozone layer absorbs most of the sun's harmful ultraviolet radiation, protecting life on earth from its damaging effects. So what is ecosystem? Ecosystem is the community of living organisms interacting with each other and their physical environment. So ecosystem is the community of living organisms, living jeev interacting with each other. Living jeeves interacting with each other and with their physical environment. Interact करें एक दूसरे के साथ और with the physical environments. So what are greenhouse gases? How do they contribute to climate change? Greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, carbon CO2, CH4 and NO2. Carbon dioxide, methane and nitrous. Carbon, methane, nitrous. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide. These are three greenhouse gases. Trap heat of the Earth's atmosphere. Heat in the Earth's atmosphere leading to global warming and climate changes. Define the term carbon footprint. Carbon footprint is the total amount of greenhouse gases emitted directly or indirectly by an individual, organization or product. So carbon footprint is the total amount of greenhouse gases emitted directly by an individual or indirectly by an individual, directly by the organization, indirectly by the organization or product, directly or indirectly. सो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ग्रीन हाउस गैस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल ने कितना इमिट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितना इमिट किया, या एक प्रोडक्ट ने कितना इमिट किया. So what is the concept of biomagnification in an ecosystem? Biomagnification is the process by which carbon toxic substances become more concentrated as they move up the food chain. कार्बन टॉक्सिक, सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जैसे जमा हो जाने को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं. कुछ सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो ज़्यादा गाढ़ा हो जाते हैं, सब्सटेंस जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एज दे मूव अप द फूड चेन. Explain the concept of sustainable development. The sustainable development involves meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. How does deforestation impact the environment? Deforestation contributes to habitat loss, disrupts ecosystem, reduces biodiversity, and can lead to soil erosion and climate change. What are the major causes of air pollution? Air pollution is caused by emission from vehicle, industrial activities, burning fossil fuels, and natural sources like wildfires and volcanic eruptions. What are carbon sinks in the context of climate change? Carbon sinks are natural and artificial reservoirs
that absorbs more carbon dioxide from the atmosphere than they release, helping to mitigate climate change. कार्बन सिंक जो है नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वर होता है जो ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जितना वो रिलीज करता है उससे ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में मदद करता है. So what is the significance of wetland in an ecosystem? Wetland act as natural water filters. वेटलैंड मतलब नेचुरल पानी को फिल्टर करने वाला फिल्टर काम करता है, फिल्टर का काम करता है, नेचुरल पानी को फिल्टर करने का काम करता है वेटलैंड. एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर डाइवर्स स्पीसीज, कंट्रोल फ्लडिंग, सपोर्ट यूनिक इकोसिस्टम. तो वो हैबिटेट को अलग अलग तरह के डाइवर्स स्पीसीज को के रहने को आसान बनाते हैं. उसका घर होता है वेटलैंड, अलग अलग तरह के डाइवर्स स्पीसीज का. फ्लडिंग यानी बांध पानी जो बाढ़ आ जाती है उसको कंट्रोल करता है, यूनिक सिस्टम्स इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज वेटलैंड. Define the term biodiversity hotspot. Biodiversity hotspots are regions with exceptionally high levels of endemic species that are threatened by human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, एंडेमिक स्पेसीज हैं, उस हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पेसीज जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. Biodiversity hotspots are regions with exceptionally high levels of endemic species that are threatened by human activities. How do marine ecosystems contribute to global climate regulation? Marine ecosystem, particularly oceans, absorbs carbon dioxide and play a crucial role in regulating the Earth's climate. What are the major sources of water pollution? Sources of water pollution include industrial discharge, agricultural runoff, sewage, improper disposal of waste. Explain the concept of biodegradable materials. Biodegradable materials can be broken down in natural processes such as microorganisms into smaller, simpler substances. How do invasive species impact local ecosystems? Invasive species can outcompete native species for resources, disrupt ecosystems, and threaten biodiversity. So what are the main causes of soil erosion? Soil erosion is caused by factors like deforestation, improper agriculture practices, overgrazing, construction activities. Define the term ecological footprint. An ecological footprint measures the impact of human activities on the environment, including the amount of land and resources required to sustain a population. कार्बन फुटप्रिंट मतलब क्या है कि वो कितना वो इमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, इंडिविजुअल. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट वो मेजर करता है. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करता है, कैलकुलेट करता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का वजह से पर्यावरण में क्या इम्पैक्ट आया, जिसमें कि अमाउंट ऑफ लैंड और रिसोर्सेज कितना चाहिए एक पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, वो भी शामिल होता है. हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी? क्लाइमेट चेंज कैन अल्टर हैबिटेट, disrupt ecosystem, lead to species extinction, and affect the distribution of plant and animal species. What are the goals of Convention on Biodiversity, CBD? Convention on Biodiversity के goals क्या हैं? The goals of Convention on Biodiversity include the conservation of biological diversity, sustainable use of its components, equitable sharing of benefits from genetic resources. That's all about the issue of the topic was environmental ecology, general issue on environmental ecology. So now let's move on to the next topic of issues related to biodiversity, climate change. So what is biodiversity? Biodiversity refers to the variety and variability of life on Earth. Variety of life on Earth or variability of life on Earth, encompassing different species of plant, animals, microorganisms, their genetic variations, ecosystem they form. So what are the major threat to biodiversity? Major threat to biodiversity include habitat destruction, pollution, invasive species, climate change, over-exploitation of resources, and deforestation. Define the term keystone species in an ecosystem. So keystone species are species that have a disproportionately large impact on their ecosystem. Disproportionately, no proportion is there.
unproportionately, disproportionately large impact on the ecosystem, often playing a critical role in maintaining their structure and function. So if you want to, if that keystone species maintain has a crucial role in maintaining the ecosystem and structure and function. So that's why they are known as keystone. They have disproportionately large impact on the ecosystem. So they have the critical role in maintaining the structure and function. So what is the significance of coral reef in marine ecosystem? Coral reef supports a vast area of marine life, protect coastlines from erosion. So protect coastlines from erosions, contribute to local economies through tourism and fisheries. So coral reef in marine ecosystem supports very vast area of marine life. Vast area of marine life, coral reefs protect coastlines from erosion and contribute to local economies through tourism and fisheries. How do climate change affect biodiversity? Climate change can alter habitat, disrupt ecosystem, lead to species extinction, and affect the distribution and behavior of plant and animal species. Explain the concept of species extinction. Species extinction occurs when a species no longer exists or survives in the wild. It is a natural process. It is species extinction is a natural process, but human activities have accelerated the extinction rate significantly. What is the role of forest in mitigating climate change? Forest act as a carbon sink uh, absorber. So it absorbs the carbon dioxide. Biodiversity hotspot. Hmm. लगता है गड़बड़ हो गया कुछ.